अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़े सवाल की गहराई में जाएंगे। क्या मोहम्मद शरीफ जाफर, जिसे पाकिस्तान में पकड़ा गया है, वाकई काबिल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड है या हमें कोई बड़ा धोखा दिया जा रहा है? 4 मार्च 2025 को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में कहा कि 2021 के एबी गेट हमले का सीनियर दहशतगर्द पाकिस्तान ने पकड़कर हमें दिया। लेकिन आज मैं आपको सच्चाई बताऊंगा जिसकी मालूमात मुझे सारा एडम्स, रायन ग्रिम्स और कुछ और वेबसाइटों से, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, मिली है। तो आए सच को खोलें। एपी गेट हमला क्या था? अगस्त 2021 को काबिल के हामिद करजाई एयरपोर्ट के एपी गेट पर एक खुदकुशी धमाका हुआ, जिसमें 13 अमेरिकी फौजी और 160-70 अफगानी शहरी मारे गए। ये हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से इनखला कर रही थी। हज़ारों लोग फरार होने की कोशिश में थे। अमेरिकी हुकाम ने कहा कि हमला आवर अब्दुर्रहमान बुगारी था, जो दाइश खुरासान का सरबराह था। मोहम्मद शरीफुल्लाह कौन है? मोहम्मद शरीफुल्लाह, जिसे जाफर, इंजीनियर शरीफ या अजमल भी कहा जाता है, दाइश के कारकुन है। 2016 में दाइश में शामिल हुआ, 2019 में पकड़ा गया और 15 अगस्त 2021 को तालिबान के जेल तोड़ने के बाद फरार हो गया। तालिबान ने 2022-23 में दाइश के बड़े लीडरों को ख़त्म किया, जिसके बाद शरीफुल्लाह सैकड़ों डिवीज़नों का सरबराह बना और अशक जनी के नाम से टेलीग्राम पर हिदायत देता था। FBI के इंटरव्यू में उसने माना कि उसने एपी गेट हमले के लिए रास्ता चेक किया और उगारी को पहचाना, लेकिन क्या वो वाकई मास्टरमाइंड था? हकीकी मास्टरमाइंड कौन थे? सारा एडम्स ने अपने बयान में कहा है कि एपी गेट हमले के 2 जॉइंट मास्टरमाइंड थे: सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क का लीडर और तालिबान का वजीर दाखिला, और सनोल्लाह गफारी, दाइश का लीडर। उन्होंने कहा कि 2012 की बनगाजी हमलों जैसा है, जहां के मुताबिक अब्दुल्ला काबली, माइग्रेशन चीफ, और डॉक्टर हुसैन अहमद अबू खटाला को झूठा मास्टरमाइंड बनाया गया। शहादत ब्रिगेडियर का सरबराह भी मंसूबा साज थे, जिन्हें तालिबान ने 2023 में मारा और व्हाइट हाउस ने उन्हें मास्टरमाइंड माना। लेकिन शरीफुल्लाह को क्यों बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? रायग्राम ने इल्ज़ाम लगाया है कि CIA और पाकिस्तानी फौज ने ट्रंप को धोखा दिया। उन्होंने कहा है कि CIA पाकिस्तान की आमराना हुकूमत को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि रिचर्ड गैनल जैसे अहदेदार वहाँ जमहूरियत चाहते हैं। उनकी दावा है कि ये जाली ऑपरेशन है, जैसे ट्रंप के किताब में शामिल किया है। सारा एडम्स ने भी कहा है कि कोई भी आपसे झूठ बोल रहा है, शहीदों की असली इंसाफ चाहिए। एक टेबल के मुताबिक सिराजुद्दीन हक्कानी, सनोल्लाह गफारी अभी भी फरार है, जबकि शरीफुल्लाह एक छोटा सा किरदार था जो हालात की वजह से अहम हुआ। पाकिस्तान क्यों मुलवस है? पाकिस्तान की फौज दहशतगर्दों को पालती है, फिर उन्हें बेचकर फ़ायदा उठाती है, जिसे उसामा बिन लादेन के केस में के लिए $370 मिलियन मिले। तालिबान कहते हैं ट्रंप उसे अपनी सियासी जीत बना रहा है, जबकि पाकिस्तान ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। हमने कहाँ से ये सारी सच्चाई ली है? कि मेरा मकसद आपको सच्चाई पहुँचाना है। दोस्तों, मैं ये सारी मालूमात सारा एडम्स, रायन ग्रिम से ली है। शरीफुल्लाह ने हमले में हिस्सा लिया है, लेकिन मास्टरमाइंड नहीं था। असली जिम्मेदार सिराजुद्दीन हक्कानी और सनोल्लाह गफारी है, जो अभी भी आज़ाद हैं। ये एक बड़ा धोखा हो सकता है, जहां CIA और पाकिस्तान अपने मफादात के लिए शरीफुल्लाह को इस्तेमाल किया है। शहीदों के अहले खाना असली इंसाफ के मुंतज़र हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये इंसाफ है या एक सियासी ड्रामा है? कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया। Hi, I'm making a quick video because so many people asked me about who is this terrorist that the U.S. government brought and extradited to the United States, saying he's the mastermind of the Abbey Gate attacks. I think we all know after a day of so much noise about it, he's not the mastermind. The 2 masterminds for Abbey Gate were
the head of ISIS Khorasan province, Sanaullah Ghaffari, and the head of the Haqqani network, Sirajuddin Haqqani. So who is this terrorist? He is ISIS. He's a low-level fighter. If we actually go back, if you've read our report, HKI Know Thy Enemy, at the end we actually have a timeline. So I thought, let's just go off the timeline to tell you a little bit of a story of him so it's helpful. You know, it was August 13th, 2021, when the US government made the announcement, decided to do, you know, the NEO, which was the evacuation from Afghanistan. What was only 2 days later when there's the huge prison break from Bagram, that's now where this Mohammed Sharifullah gets out of prison. Well, when he leaves prison, he escapes with two terrorists. One is named Adel Panshiri. He's very interesting because he was actually the key plotter behind the Kerman Iran attack, which was the one on Qasem Soleimani's grave, 4 years after, the U.S. Took him out. He would actually have been a really great capture. And anyway, and then the third terrorist with them was actually the bomber at Abbey Gate. His name's Abdul Rauf Sangari. If you haven't read our report, you might not have heard that name. We were the only ones to identify him in true name, so the U.S. government calls him by his ISIS alias, which is Abdul Rahman al-Lagori. So these three terrorists break out of prison together, okay? Just 3 days later, the suicide bomber is now down in Kandahar sitting in the plotting meeting for Abbey Gate, right? Abbey Gate then, of course, occurs August 26th. So who's in that meeting? Well, of course, the two masterminds we talked about, Sirajuddin and then Sanaullah. Also in the meeting is Sanaullah's deputy, Rajab, a couple of Sirajuddin family members. One is Hafiz Haqqani. Hafiz Haqqani is an interesting cat because he ends up being the commander on the ground at the attacks that tells the suicide bomber, hey, you're in the perfect position, now detonate. He's also the son-in-law of Dr. Ayman al-Zawahiri. So he is a Haqqani and he is a Zawahiri. And our government only tells you this was an ISIS attack, right? Like, we have a problem already in this story. Another terrorist at the plotting meeting is Abdulaziz Haqqani. He's well known. He's on the U.S. most wanted list for $5 million for being a key Al-Qaeda facilitator, right? When we say Al-Qaeda facilitator, he was one of Zawahiri's main facilitators. He's the one who brought the head of ISIS up to Kabul to be, near the attacks when it happened. So just so you understand, I just gave you, of course, the names of the masterminds and then the key plotters, which were Haqqanis. Even if we talk about the planners and supporters at the gates, it was Haqqani network members who allowed the suicide bomber to go through the gates. Now, this isn't the first time this individual's name came up, the one we extradited. It was April 25th, 2023, when the Biden administration made an announcement, hey, the Taliban killed the mastermind of the Abbey Gate attacks. I posted then, I believe it was on our LinkedIn, and pushed back and said, first off, he's not dead. The Taliban hasn't done a successful operation and killed anyone from ISIS. And secondly, that would be a fake mastermind. He's not the real mastermind. Of course, that ended up being a ruse. What the Taliban unfortunately did on March 10th, they did a fake operation against ISIS and they killed 8 civilians, and some of them were construction workers and other ones were actually Afghan allies who fought with us. Just this last January, we did a whole post with a video of that incident talking about it because it was a war crime, right? So not only have people been dishonest that this is a mastermind, we've had innocent people die over him, and now he's in the US, he's going to go through the court process, probably get 20 years in prison. And again, he could have maybe done some casing. Maybe he was riding in the car to some of these meetings. I don't know, but this is a low-level ISIS fighter. And I do think we should expect more from our government when it comes to justice. And we had this happen with Benghazi. They brought a fake mastermind, and everybody was done with Benghazi. We didn't get justice. So we really hope everybody understands the masterminds are at large. They're still plotting against us here. They're connected to the Haqqanis and Al-Qaeda, and it's time for our government to be honest about it. Thank you.